कुछ मिस हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर दो। आई थिंक सो रिकॉर्डिंग आपने कितने, लाइक दिख एक सेकंड, रिकॉर्डिंग कितने देर का 1 आवर का है सर, पर आई थिंक सो है? आपने लाइक पिछला वाला दिखा लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग इससे है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड से। नहीं, रिसेंटली जो हमने लिया ना उसमें तो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग है। यस सर। ट्वेंटी 1.5। फोर्थ। हम्म। टेल मी हाँ बताइए। ना ना, आपने आई थिंक सो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आधा घंटा के बाद आपने शुरू किया है लाइक नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग आधा करवाना। घंटा नहीं नहीं, आधा घंटे बाद नहीं शुरू किया था हमने, मतलब कुछ देर हुए थे, लाइक आधा घंटा इन द सेंस कि क्लास स्टार्ट होने के आधा घंटा हो गया था, लेकिन कंटेंट उतना नहीं कवर किया था। जो स्लाइड्स हमें पुरानी ओके बताई ना, ओके। है ना, तो वही सारे स्लाइड्स है, लेकिन आपने हम उसको ना भेज ही देते। वो रह गया था हमसे भेजना। जस्ट अ सेकेंड। हम्म। हमने ज्विटर आयन से स्टार्ट किया, ज्विटर आयन से पहले था होगा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ना। यस सर। क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। Hmm, 157, I think 300, 200 something, 157 से क्या? नहीं, इससे आगे कर लिया मैंने। 250। अच्छा, आई थिंक, बट इट विल नॉट बी शोन हियर ना। लास्ट क्या किया था हम लोगों ने इसमें? ओ, फिर आगे ऐसे स्लाइडर वाला ये रिकॉर्ड हुआ है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। Function of enzymes, no. The name of given dipeptide. We are done till 200 itself. Last we have 54 pages. अच्छा, ये लेक्चर का क्या होगा? लेक्चर नंबर 5। वो आपको मैसेज आ जाएगा उसका। Let's move, we'll see what we were doing, कहाँ तक पता हमारा।
So we have seen KCN versus AGCN, है ना? Fine. And after this, so as we have seen, na? See, as we have seen that the most friends, Yusuf is here. Okay, fine. Yusuf, did you get any message regarding biomolecules? Yusuf, Sorry, sir. did you get any message regarding biomolecules class? I think yes, on Friday. On Friday morning? Yes, sir. Okay. See, so we have seen that why do we get alkyl cyanide when I react with KCN and isocyanide when we react with AgCN. Next, we are going to look how the reactivity of KNO2 and AgNO2 differs. Okay. So the basic concept here is still the same as was the case of KCN and AgCN, that KCN is ionic in nature and AgCN is covalent in nature. Okay. So we'll write the topic. KNO2 versus AgNO2. ठीक है. Now in this case पहले हम लोग देखते हैं KNO2. See here. KNO2 and AgNO2, what happens? So first of all, same thing. KNO2 is what? Ionic in nature. KNO2 is ionic in nature. Therefore, exists as K positive and NO2 negative. Okay. Now, in the structure of NO2 negative, if I look, then the structure of NO2 is something like this: nitrogen doubly bonded with oxygen and singly bonded with one oxygen here. Okay. Now, as you can see that both this oxygen atom is having 3 lone pairs with a negative charge. This oxygen atom is having 2 lone pairs. This nitrogen also has 1 lone pair. But what do you think? Where is the probability of attacking more? Oxygen में या nitrogen में? Think about the numbers. यहाँ पे there are 2 oxygen atom which are what having lone pair electrons, and there is only 1 nitrogen atom which is having lone pair electrons. Apart from this, the oxygen atom is having a negative charge. तो ज्यादा टेंडेंसी कहाँ होगी अटैक करने की? The oxygen is going to attack more easily on the alkyl halide. That is why you will see, since oxygen has negative charge, it attacks the alkyl halide Rx and forms RON. RONO. ठीक है, this is known as alkyl nitrite. Alkyl nitrite. ठीक. Now, if I look at AgNO2, then AgNO2 is covalent in nature. AgNO2 is covalent in nature. Therefore, it exists कैसे? It exists as Ag bonded with Ag, it will be bonded with oxygen, then further nitrogen, and then further doubly bonded with oxygen. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, then please see that अब negative charge कहीं नहीं है मौजूद. Can all of you see that? Yes or no? Please tell me. है ना guys? नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है. अब यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन अटैक करेगा या नाइट्रोजन, तो कौन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है. सो हियर वी विल लुक एट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Since the electronegativity of nitrogen is lower, it can donate and add the electron more easily. ठीक है, वो जल्दी से अटैक कर सकता है because the nitrogen is having less electronegativity.
Just a second, guys. Guys, give me a second. So here you will write, since nitrogen is less electronegative than oxygen, it can easily attack Rx and form RnO2. नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, RnO2, that is nitroalkane. So copy this down. Raise your hand once you're done. Okay. Fine. So you have seen here the complete nucleophilic substitution reactions, है ना? अब चलते हैं अगले टॉपिक में. प्लीज राइट. एक मैकेनिज्म कर लीजिए आप लोग. दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली देयर इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है. एक सवाल दिया आपको, NBUBr प्लस KCN गिव्स BUCN. ठीक है, इसका मैकेनिज्म. एनी आइडिया व्हाट इज BUBr? हाँ गाइस, व्हाट इज NBUBr? नो आइडिया. देखिए, एनी जो है ना, ये मिथाइल के लिए यूज होता है. ET यूज होता है इथाइल के लिए. उसके बाद PR यूज होता है प्रोपाइल. एंड BU इज यूज फॉर ब्यूटाइल. और N का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल. तो नॉर्मल ब्यूटाइल होगा 1 2 3 4 कार्बन एटम्स विच इज फर्दर अटैच विथ Br प्लस KCN is going to give you 1 2 3 4 and then CN. ठीक है. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, they are asking right what is the mechanism here. तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? In the first step you will show that KCN dissociates into K positive and CN negative. In the second step what happens? K positive and CN negative के बाद you will make the butyl bromine Br plus. अब CN में आप दिखाइएगा, you will show the complete CN molecule like this. लास्ट क्लास में हम लोगों ने CN देखा था कैसा होता है ना, CN negative, right? So it will be like this. Carbon triply bonded with nitrogen. एक लोन पेयर यहाँ पे बनाया क्या? अच्छा, here we have made ना CN negative. ठीक है. So and there is one lone pair in carbon with a negative charge on carbon. Now this carbon atom, it attacks onto the alpha carbon because
ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, एंड दिस डेल्टा पॉजिटिव इट अट्रैक्ट्स द CN नेगेटिव, and when it attacks on this carbon atom, then this bromine leaves. 1 2 3 4, CN is at the fourth carbon atom plus Br negative, which is leaving group. Please write this down. Waiting for Mir, Safia, and Yusuf. Waiting for Mir and Yusuf. मीर, आप लास्ट क्लास में आए थे? नहीं सर। तो रिकॉर्डिंग देखा आपने? Did you watch the recording? नो मीर, सर, नहीं। फिर कैसे चलेगा काम? जब भी आपका लेक्चर मिस हो ना, देन प्लीज आस्क फॉर रिकॉर्डिंग विद द टीम, है ना? आप टीम को मैसेज कीजिए कि इस पर्टिकुलर डेट में हम एब्सेंट थे, कैन यू प्लीज सेंड द रिकॉर्डिंग, दे विल सेंड यू. See here guys, elimination reaction. Now, basically in elimination reaction what will happen? कार्बन है आपके पास, there will be कार्बन कार्बन बॉन्ड. इस कार्बन में जनरली आपको मिलेगा एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास होगा हाइड्रोजन, and there are some groups attached to it as it is. ठीक है? And in elimination reaction we use base with some heat, and what happens? The base attacks on hydrogen. हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को यहाँ पे देता है, ठीक है? बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट दी हाइड्रोजन. सो बेस हाइड्रोजन को लेके चला गया, हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दिए, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला हाइड्रोजन एटम निकल गया. सो व्हाट यू विल सी इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C, एंड दीज टू ग्रुप्स विल बी एज इट इज. जो यहाँ पे ग्रुप्स अटैच्ड है, दे विल नॉट चेंज, दे विल बी रिमेनिंग एज इट इज. ठीक है? सो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ व्हाट, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन in haloalkene. And since you can see hydrogen and halogen both are removed, this is aka also known as dehydrohalogenation, also known as dehydrohalogenation. ठीक है? What is removed? Hydrogen and halogen is removed. ठीक है? Please write. When alkyl halide is treated with alcoholic KOH, then it undergoes dehydrohalogenation and forms alkene. लिख लीजिएगा ऐसे, CH3 CH2 Br. ठीक है? Here you are having alcoholic KOH, a bit of heat. So the alpha carbon, यहाँ से आपका पास Br निकल जाएगा. From the alpha carbon you will remove the Br, and from the beta carbon you will remove the hydrogen. So you will see beta से hydrogen निकलेगा, so you will have CH2 double bond and CH2, because from the alpha carbon what has been removed? Br has been removed. Okay? Plus you will get HBr. So
अच्छा, इसका एक और नाम होता है, दिस इज आल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन. नाउ हियर वी विल सी व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग. सो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बॉन्ड्स ब्रोकन की अगर हम बात करें. बॉन्ड्स ब्रोकन, then tell me what bonds are broken. What bond from the alpha carbon is broken? Tell me guys. अल्फा कार्बन का कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है? यस सर बी अरसलान. आर. हाँ. सो अल्फा कार्बन, the carbon which is alpha carbon and Br bond is getting broken, and beta carbon का कौन सा? हाइड्रोजन. All of you got this guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. यस सर. Bonds formed. बॉन्ड्स कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है? कार्बन जो अल्फा है और कार्बन जो बीटा है, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. यस सर. जल्दी लिखिए. नेक्स्ट. ठीक है. आइडेंटिफाई अल्फा और बीटा. अल्फा से बी आर निकालिए या फिर अल्फा से जो भी हाइड्रोजन है वो निकालिए. चलिए यहाँ पे हम आयोडीन रख देते हैं ना फॉर अ चेंज. बट यू जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू रिमूव व्हाट? हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा कार्बन. बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड. ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट एंड सेंड मी ऑन चैट. सेंड चैट नहीं, मतलब व्हाट्सएप में भेजिए. हो जाएगा? क्या ख्याल है? अरसलान, सफिया, यूसुफ, कृष्णप्रिया एंड मीर. हाँ गाइस, होगा? यस सर. कीजिए, ट्राई कीजिए. यस यूसुफ, करेक्ट, वेरी गुड. कृष्ण प्रिया, नॉट नॉट करेक्ट. अरे अच्छा, सफिया कहाँ अच्छा, माय गॉड. सफिया आपने पेंसिल से लिखा, दिख भी नहीं रहा था हमें. या दैट्स राइट, वेरी गुड. सफिया करेक्ट है. कृष्ण प्रिया, कैन यू आइडेंटिफाई द मिस्टेक? यस कृष्ण प्रिया. Hold on, sir. I'm checking. Count the number of carbon atoms, you will understand the mistake. Oh, okay. Yeah, that is one extra carbon. Okay. Hmm.
Arsalan, what about you? Mir, what about you? Yes, sir, I'm saying. Krishna Priya, you have sent it. Yeah, that is correct. देखिए guys, see here. Iodine जिस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, this carbon is alpha carbon. Adjacent to it is the beta carbon. What you need to do? देखिए, when you are making bond line structure, तब तो आपको वहां पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. You will just write the 3 carbon atoms and double bond between alpha and beta. Alpha और beta में double bond plus HI. Now let us suppose that आपको इस तरह से bond line structure नहीं दिया. You have been given like this: CH3, CH2, CH2, and iodine. And here you are having the same reagents. So what you will do? Another same thing. You will identify the alpha. You will identify the beta. Then from alpha you will remove the halogen. That means the iodine will be gone. From the beta you will remove one of the hydrogens. So आपको क्या बचा? CH3. Now from beta you have removed one hydrogen. So you are remaining with one more hydrogen. CH double bond with alpha and beta and CH2 plus HI. The same thing. Okay, it's just that it's a bit easy when you have the bond line structure. You don't have to write all the carbons and hydrogens. Similarly, try to make for this one. Send your answers once you're done. मीर और असलान, आप लोग भी कोशिश करके भेजिए. Yes, sir. You have got yours. Okay, fine. What about others? Safia, Arsalan, Mir, Yusuf.
What happened, guys? Any problem? Tell me. Yusuf, Arsalan, Safia, सर Mees. भेज रहे हैं। भेज रहे हैं जल्दी भेज। अच्छा ठीक है। यस सर। सब ठीक है ठीक है। अरे ऊपर CH3 नहीं है सफिया। देयर आर 3 कार्बन्स ओनली। हाँ ये आपने जो बनाया वो ठीक है, इट्स फाइन, बट आपने गलत स्ट्रक्चर बनाया ना। ये देखिए, हियर वी आर ओनली हैविंग 3 कार्बन्स ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, एंड द सेकंड कार्बन इज हैविंग ब्रोमीन। ठीक है, वॉट एवर यू हैव डन उसको आप ऐसे ही रखिए। आप इसके लिए कीजिए जरा, 3 कार्बन ना यहाँ। यू हैव शोन 4 कार्बन एटम्स, दैट्स नॉट राइट। अरसलान, CH3 कहाँ से ले आ रहे हैं आप? नंबर ऑफ हाइड्रोजन का देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए ना, सही नहीं है आपका। 4 ही तो बॉन्ड होते हैं। ये देखिए अब इसमें ना आपको, यस सर। अब ये तो बहुत बेसिक हो गया है, 4 कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, उसको आप ठीक कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। So guys, I will give you 1 more minute and then I will show how to do this type of questions. ठीक है, करेक्ट है गाइस। सफिया करेक्ट है आपका। ठीक है, सो अगेन सेम थिंग। देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ये हो सकता है दैट दिस इज द अल्फा कार्बन। नाउ एडजेसेंट टू अल्फा कार्बन ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। सो ऐसा आपको लगेगा दैट यू आर गोइंग टू, देयर आर गोइंग टू बी 2 प्रोडक्ट्स, बट रादर 2 प्रोडक्ट नहीं, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, बिकॉज लेट्स सपोज इज द फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन है। आई एम मेकिंग अ डबल बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड अल्फा, प्लस आपके पास दूसरा जो बनेगा इस तरह से। बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, prop 1 इन। ठीक है, दीज आर नॉट आइसोमर्स, दे आर द सेम कंपाउंड। ठीक है, दे आर द सेम कंपाउंड, दिस इज prop 1 इन, इवन दो there are 2 beta carbons, both the beta carbons are same. Now let us see what will happen if we have 2 different beta carbons, है ना? For example, you have 4 carbon atoms like this. There is a Br group here. I am taking Br, but आप ये समझिए, चलिए क्लोरीन वगैरह भी चलिए, ठीक है क्लोरीन लेते हैं। Now here if you see, and let us do the reaction with alcoholic KOH. Now here if you see, this is the alpha carbon, और यहाँ पे आपके पास ये जो कार्बन है, दिस इज द बीटा 1, लेट अस सपोज। ठीक है, बीटा 1 क्योंकि हम ये ना 1 डिग्री है। ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट बीटा 1। ये दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बीटा 2 व्हिच इज 2 डिग्री, बीटा 1 एंड बीटा 2। तो यहाँ पे अब आपके पास यू विल हैव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। सो वन प्रोडक्ट इन विच द अल्फा एंड बीटा 1 is having a double bond, and the second product will be in which alpha and beta 2 are having the double bond. So this is, if you see closely, it is but 1 in and this is but 2 in. Now when you have 2 different product, one will be major and the other will be minor. Now when we look at the mechanism, then we understand that the mole substituted alkene is what, it is the major product. This one is major, but 2 in, and this one is minor product. Now why does that happen? We will look into that later on, but अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसके लिए we have a rule that is known as Setzef rule. Please write here, Setzef rule. So this rule was given by a scientist whose name is written like this, Zaitsev.
Now I don't know why, but it is pronounced ZZF. ठीक है? It is written as ZZF, but it is pronounced as ZZF. So what does this rule say? Please see and write here. During elimination, please write. During elimination, hydrogen is removed. Hydrogen is removed from that beta carbon which bears lesser number of hydrogen, to form major product. ठीक है? Another line that you can remember is more substituted alkene is major product. More substituted alkene is major product. ठीक है? Please write this down. Raise your hand once you're done, then we will do some questions. Raise your hand once you're done, guys. All of you are done. See here. We're going to do a lot of questions. बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा किस तरह से सवाल करना है. ठीक है? Now let's suppose first of all we have simple जो अभी हम लोगों ने किया था. Br alcoholic KOH, the presence of heat. ठीक है? So you identify the alpha and beta. सबसे पहले तो आपका काम ये होना चाहिए alpha, beta और beta. This is beta 1 degree, this is beta 2 degree. इतना कर पाएंगे आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री? यस और नो प्लीज टेल मी. जिनको नहीं आइडेंटिफाई करने आता है 1 डिग्री 2 डिग्री, प्लीज लेट मी नो नाउ. वी विल सी दैट. ऑल इफ यू कैन डू दैट ना. 1 डिग्री 2 डिग्री. देखिए, दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन, तो ये 1 डिग्री हो गया. दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन हियर एंड द अदर कार्बन हियर, तो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इट विल बी 2 डिग्री. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. बोले प्लीज. पक्का ना? कर लेंगे? I hope you can identify ना. This is alpha, this is now beta 1, this is beta 2. अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? जहां पे डिग्री ज्यादा है. ये 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री और अल्फा के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. दिस विल बी मेजर प्लस माइनर क्या होगा? 1 डिग्री वाला अल्फा और बीटा 1 के साथ. सेकंड देखिए, प्लीज सी हियर गाइस. लेट अस सपोज, हाँ आपके पास कुछ इस तरह से you have iodine, here you have alcoholic
KOH एंड हीट। ठीक है, अब यहां पे आपके पास है मान लीजिए एक और CH3। नाउ आई एम राइटिंग द नंबर 1 2 3 4 5 6। टेल मी विच कार्बन इज अल्फा कार्बन, विच कार्बन इज अल्फा कार्बन। ओह एक सेकंड गाइस, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया। एक सेकंड, 6 कार्बन कहां से आ जाएंगे, वेट अ सेकंड। 1 2, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। ठीक है, टेल मी। और ये यहां पे डाल दीजिए इसको सिक्स्थ। विच इज द अल्फा कार्बन इन द चैट क्विकली, विल गिव यू 10 सेकंड्स। अल्फा कार्बन, डोंट राइट प्लीज, डोंट राइट। 10 सेकंड्स है आपके पास। विच इज द अल्फा कार्बन 1 2 3 4 5 में। 1 2 3 4 5। सेंड योर आंसर्स टू सालिम। 6 7 8। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। नाउ व्हाट आर द बीटा कार्बन, कौन कौन से बीटा कार्बन है? अरसलान रॉन्ग, सेकंड इज द अल्फा। देखिए, आयोडीन डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस कार्बन ना, प्लीज यार इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ओ अल्फा सही है। कार्बन इज व्हाट, द सेकंड कार्बन इज अल्फा कार्बन। ठीक है, आयोडीन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बन, दैट इज द सेकंड कार्बन। या व्हाट आर यस। द बीटा कार्बन्स? ठीक है अरसलान, फाइन। बीटा कार्बन बताइए, बीटा कार्बन कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए। बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और जल्दी जल्दी। बीटा कार्बन नहीं, अरसलान गलत। एक सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है। हाँ ठीक है, आप ठीक है अरसलान। यूसुफ करेक्ट, वेरी गुड। सफिया आपने आंसर भेजा है? सफिया हैज नॉट सेंट। मीर हैज, मीर आपका आंसर नहीं आ रहा बिल्कुल। इन द चैट, इन द चैट सफिया। व्हाट आर द बीटा कार्बन्स, बीटा बीटा बीटा, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन। नो 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 नो, गलत, गलत। देखिए सीयर गाइस, ठीक है, सेकंड कार्बन इज व्हाट, दिस इज द अल्फा। सेकंड कार्बन आपका अल्फा हो गया। ठीक है, अल्फा कनेक्टेड किससे है? 1 से। और अल्फा किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है? 3 से। सो दिस इज व्हाट 1 इज, एक बीटा हो गया, और 3 वाला भी एक बीटा हो गया। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ फर्स्ट कार्बन एटम, पहला कार्बन जो है ना बीटा, व्हाट इज द डिग्री? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या डिग्री है उसका? 2 डिग्री। दैट इज करेक्ट, दिस इज बीटा 2 डिग्री। और 3 वाला? 3 डिग्री। हाँ, 3 वाला जो है 3 डिग्री है ना, इट इज कनेक्टेड टू 1 2 3। बताइए कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा मेजर में, 1 के साथ या 3 के साथ? 3 के साथ। 3 के साथ। बट उससे पहले आप लोग ध्यान रखिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट एज इट इज। यू विल राइट एवरीथिंग एज इट इज एक्सेप्ट द आयोडीन। आयोडीन तो निकल गया है, एंड देन यू विल एड अ डबल बॉन्ड यहाँ पे। दिस इज द मेजर, प्लस विल हैव अ माइनर प्रोडक्ट, everything as it is CH3, the minor product will have with the less substituted carbon atom। ठीक है, चलिए मेजर। चलिए इन दोनों का आंसर भेजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।
Okay, Safia and Krishna Priya has sent the answers. Sudan has also sent. ठीक है, let me see. Major minor, अच्छा ठीक है ठीक, fine fine fine. Yes, Krishna Priya, very good, correct. Both the answers are correct. Safia major और minor नहीं लिखिएगा. Okay, I'll Yes write, sir. Safia, जी करके भेजिए. Yes, very good अरसलान, बहुत सही. अच्छा दूसरा दूसरा फोटो है, अच्छा. यस बहुत सही, वेरी गुड. यूसुफ, यस यूसुफ करेक्ट, वेरी गुड. चलिए ठीक. मीर, आपका आंसर आ ही नहीं रहा है. मीर, मीर, मीर तो अब जवाब भी नहीं दे रहे. ठीक है, सो होपफुली अब आप लोग कर लेंगे. यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. हो जाएगा आप लोगों से, Yes, sir. Yes. है ना? Yes, sir. चलिए, आफ्टर दिस यू विल राइट अ फ्यू नोट. ठीक है. In note, what we are going to write, first of all, please see the following. The following reagents can be used. Following reagent can be used for dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Okay, what are these? Number one is alcoholic KOH. You have seen this. Or you can use alcoholic similar to this as NaOH. The second reagent that we can use is RONA. This is sodium alkoxide in the presence of any alcohol, ROH. The third that we can use, it is NaNH2, that is sodium amide. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग. इन तीनों में से कोई भी आपको एक रिएजेंट दिख जाए, दैट मीन्स डीहाइड्रोहालोजिनेशन इज हैपनिंग. नाउ रिगार्डिंग द रेट ऑफ एलिमिनेशन, कहाँ पे फास्टर होगा? रेट ऑफ एलिमिनेशन. देन if I talk about alkyl halides, then RF will be the slowest, followed by RCl, followed by RBr, and the fastest reaction will be shown by RI. Because why? Because carbon iodine bond is a weak bond. आसानी से टूट जाता है. Is a weak bond because the carbon and halogen, the iodine atom that we are having, they have a large difference in their p orbital, है ना? कार्बन का 2p orbital और iodine का 5p orbital, so the overlapping is not very good. Now if I talk about the alkyl group, है, यहाँ पे alkyl group same है but we are having different halogen atoms. तो अगर alkyl group की बात करें तो obviously we have seen कि 3 डिग्री वाला मेजर हो जाता है, then 2 डिग्री वाला मेजर तो तभी होगा ना जब ये फास्टर हो रिएक्शन. That's why the 3 degree will be fastest, then 2 degree and then 1 degree. Just let me know if you're done. लिख लिया सबने? Yes or no?
अच्छा, almost everyone is done. Just waiting for Krishna Priya. Done everyone? ठीक है. Now, there is one very famous question from this topic and the previous topic, nucleophilic addition, the nucleophilic substitution reaction. So that is regarding alcoholic KOH versus aqueous KOH, है ना? So if you see the reaction RX, ठीक है, सवाल ये है that RX haloalkane when it is reacted with aqueous KOH, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है बताइए जरा. When it is reacted with aqueous KOH, look at your notes and tell me aqueous KOH देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा. See and tell me guys, haloalkane plus aqueous KOH, what is the product? लिखाया हुआ है हमने. हाँ, एनीवन? नहीं, किसी को नहीं दिख रहा नोट्स में. हाँ यस सर है. क्या है बताइए aqueous KOH में? सर ROH हो जाएगा. ROH मतलब क्या कंपाउंड है ये? ROH OH ग्रुप रहता है तो क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहल. अल्कोहल. वेरी गुड, है ना, अल्कोहल. एंड अल्कोहल इज फॉर्म वाया SN, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सही है. और अल्कोहलिक KOH होता है जो अभी हम लोगों ने देखा. देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट एल्कीन, राइट? वी गेट एल्कीन वाया एलिमिनेशन. तो देखिए अलग अलग तरीके से सवाल आ सकता है. आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. दे कैन टेल यू when we react haloalkene with aqueous KOH we get alcohol, but when we react with alcoholic KOH we get alkene. Why? Explain. ठीक है. This is one way of asking the question. Another way of asking is that कि वो alcohol और alkene ना बोल के क्या बोले, when haloalkane is reacted with aqueous KOH nucleophilic substitution occurs, but when haloalkene is reacted with alcoholic KOH then elimination occurs. Why? बात समझ में आ रही है? किस किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है? ये सुनो प्लीज मी गाइस. Yes, sir. ठीक है. यस सर. अब इसका जवाब क्या होगा वो जवाब देख लेते हैं. तो देयर इज ऑब्वियसली सम डिफरेंस बिटवीन aqueous KOH एंड अल्कोहलिक KOH. इसमें डिफरेंस क्या है? प्लीज सी, यू विल राइट हियर. देखिए इसमें वही हम दो डिफरेंस आपको ऐसे करके बता दे रहे हैं. नो 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 नो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी aqueous KOH. aqueous KOH में क्या होता है? यहाँ पे इन aqueous KOH आपके पास होगा OH नेगेटिव. OH नेगेटिव ion is present which acts as nucleophile. Which acts as nucleophile. Why? Due to its smaller size. Due to its smaller size and attacks on carbon atom showing SN and forms
ROH यानी कि अल्कोहल। वहीं जब आपकी बात होती है अल्कोहलिक KOH की, अल्कोहलिक KOH, then here what ion do I have here? We have RO negative या फिर OR negative. RO negative ion is present. Ion is present which acts as base due to its larger size and attacks on, अब बताइए बेस है तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन या हाइड्रोजन? टेल मी गाइस, बेस है तो किस पे अटैक करेगा, कार्बन या हाइड्रोजन? अरे बोलो भाई, बेस कहाँ अटैक करेगा? कहीं नहीं। वेयर विल द बेस अटैक? ओ माय गॉड, यार बेस हैज अफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन ना, सो इट विल अटैक ऑन द हाइड्रोजन एटम, सो इट अटैक्स ऑन, यहां लिख लीजिएगा बीटा हाइड्रोजन, इट अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन showing elimination and forms alkene, and forms alkene. सबने लिख लिया? वेरी गुड। राइट, नेक्स्ट। ये पूरा आपको ना लिखना ही पड़ेगा व्हेन दे आस्क ना। सो अब ये सवाल जो है ना आपका, भले ही बहुत ज्यादा लिखने को है, लेकिन ये आएगा सवाल एक ही मार्क्स में, ठीक है, इवन दो यू हैव टू राइट अ बिट मच। तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे, अगर आपके पास टाइम नहीं हो, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, इन केमिस्ट्री एग्जाम यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है। केमिस्ट्री इज नॉट वन ऑफ दोज एग्जामिनेशन जहाँ पे टाइम की कमी पड़ जाए आपको, जनरली ऐसा नहीं होता है। बट लेट अस सपोज कि आपको बहुत आखिरी टाइम में बिल्कुल याद आया कि क्या कंसेप्ट है इसका, कैसे आंसर लिखना है, सो आप क्या लिख दीजिएगा, इस तरह से लिखिएगा, OH नेगेटिव स्मॉल देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल, देयरफॉर SN, और उसके बाद ROH, ठीक है। यू जस्ट शो। अब आपको समझ में आया ना कि OH नेगेटिव क्या है, इन एक्वस है ना, ये एक्वस KOH की बात है, हम ये एक्वस KOH की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्वस KOH की। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि OH नेगेटिव लिखना जरूरी है, स्मॉल होता है, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई अल्कोहल। ठीक है, यहाँ से जो चेक कर रहा है उसको कम से कम थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है, आपको पता है। एंड अल्कोहलिक KOH लिखिएगा आप, अल्कोहलिक KOH में क्या हो रहा है, यू हैव RO नेगेटिव विच इज बिग, विच इज एक्टिंग एज बेस, और उसी की वजह से वो क्या देता है, एलिमिनेशन, एंड देयरफॉर इट गिव्स एल्कीन। बात समझ में आ रही है ये सोनो पीसल मी गाइस? यस। और इफ यू गॉट दिस, सोनो पीसल मी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिए, तो शॉर्ट फॉर्म जो है,
चलिए, सो एलिमिनेशन इज डन। कृष्ण प्रिया, यूसुफ, लिख लिया ना आपने ये शॉर्ट फॉर्म में Yes. कैसे लिखना है? ठीक है। आफ्टर दिस यू राइट द रिएक्शन विथ मेटल्स। प्लीज राइट द हेडिंग। रिएक्शन विथ मेटल्स। इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बेसिकली यहाँ पे आपके पास दो रिएक्शन है, एक मैग्नीशियम के साथ और एक सोडियम के साथ। ना इन मैग्नीशियम रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और दूसरा सोडियम के साथ है। इन सोडियम वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड देन वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, सो बेसिकली आप यहीं पे एक बार ना क्लासिफाई कर लेते हैं इसको। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद मेटल्स। One of the reaction is with magnesium and the other reaction it is with sodium. Now in sodium we have three reaction. एक reaction है आपका क्या, Woods reaction, then we have Fittig reaction, and then we have Woods Fittig. Sorry, Woods Fittig. Woods Fittig reaction. मैग्नीशियम रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले लिखिएगा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। नंबर वन इज रिएक्शन विथ magnesium. In reaction with magnesium, please write, you will have haloalkene, that is Rx. It will react with Mg, and this reaction it is done in the presence of dry ether. Dry ether. एक इंसर्शन रिएक्शन होगा, मैग्नीज विल गेट इनसाइड Rx बॉन्ड, R और X के बीच में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज जनरली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके नाम की बात आएगी जब ना, तो नाम कैसे होगा इसका? नाम होगा, यू हैव एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन अकर विद मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, CH3 और आपके पास Br है प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यू विल गेट CH3 Mg Br। नाम क्या हो जाएगा? CH3 इज मिथाइल, Mg is magnesium, Br is bromide. You can even have this with haloalkane, sorry, haloarene. And here you have, let us suppose, Cl. You react this with Mg with the same dry ether. Dry ether is not a, please remember, dry ether, it is not a reagent, it is just a solvent. ठीक है, तो रिएजेंट नहीं है, वो सॉल्वेंट है। एंड व्हाई डू वी यूज ड्राई ईथर, उसका भी एक आपके पास सवाल आता है। you'll write here MgCl, Mg and then bonded to Cl. Now what is this? This is phenyl magnesium chloride. ठीक है, I hope you have written this down. Please write. Gr, that is Grignard reagent, is very reactive.
is very reactive, due to which it can even react with moisture. It can even react with moisture and form alkene. Therefore, whenever you see this, therefore, then please understand that this is a question, right? Therefore, ये y टाइप का सवाल आ सकता है, इस नोट से y टाइप का सवाल आ सकता है, प्लीज राइट. Therefore, it is always prepared in anhydrous condition. Anhydrous condition. ठीक है. Anhydrous condition का क्या मतलब हुआ? In the absence of water. Dry ether, what does it mean? Dry का मतलब क्या होता है? Dry का मतलब होता है without, I mean absence of water. ठीक है. Dry in chemistry is absence of water. So please see what will happen. कैसा reaction हो जाएगा? So here we have ethyl bromide. ठीक है. इसको आपने react किया Mg से, you will get ethyl magnesium bromide. When you will react this with water ना, तो ध्यान दीजिएगा water जो होता है HOH ऐसा होता है. ठीक है. Now magnesium, which is a metal, it has a tendency to give electron. That is why this carbon atom here, it will be delta negative. Now when this is delta negative and the hydrogen here is delta positive, this carbon atom will attack on the hydrogen atom and फिर ये क्या बनाएगा? CH3. This is CH2. It will get the hydrogen and become CH3 plus you will get MgBrOH. ठीक है. Now this is alkane. अब ये बताइए, आपको चाहिए था क्या? मैग्नीशियम, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. यू नीडेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बट यू प्रिपेयर्ड दिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बचेगा नहीं जो आपको चाहिए था. इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, गेट कन्वर्टेड इनटू alkene by reacting with water. That is why if you want Grignard reagent, you should have anhydrous condition. सवाल क्या आएगा? सवाल ये आएगा, Grignard reagent is always prepared in anhydrous condition. Full stop. Why? अगर दूसरे तरीके से, why is Grignard reagent always prepared in anhydrous condition? बात समझ में आ रही है? सुनो प्लीज टेल मी गाइस. यस सफिया, अरसलान, मीर, कृष्णा प्रिया. यस ना? ठीक है. चलिए इसको लिख लीजिए जरा. इफ यू हैव नॉट रिटन दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. डन. राइट. नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम है ना. रिएक्शन विद सोडियम. ठीक है. रिएक्शन सोडियम में सबसे पहले लिखिएगा आप वुड्स रिएक्शन. I don't know if you remember this or not, but Ward's reaction is present in 11th standard also. Okay, so what happens in Ward's reaction? You take two molecules of haloalkane and then you react this with sodium in the presence of dry ether. Again, dry ether because sodium is very reactive with water. No? Sodium haloalkane की जगह water से react कर जाएगा. That is why dry ether. And then you will get an alkene which is double the number of carbon atom.
you will get R bonded to R plus NaX. If you balance this, यहाँ पे 2 आएगा और 2 सोडियम, ठीक है. So if you take CH3Br plus sodium in the presence of dry ether, तो फिर क्या मिलेगा आपको? CH3 bonded to CH3, ठीक है, plus NaBr. You can balance the reaction. Balancing बहुत ज्यादा या दिक्कत की बात नहीं है. So let us suppose you have 2 carbon atoms and then Br. Br की जगह कुछ और भी हो सकता है भाई, ठीक है ना. ऐसे आप लोग बिल्कुल दिल में मत ले लीजिए. आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है. आयोडीन प्लस सोडियम ड्राई ईथर. तो 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन आ जाएंगे बोलिए गाइस? When you have 1 carbon तो 2 कार्बन का alkane. When you have 2 carbon then how many carbon alkane? The alkane will सर be of how 3 many या carbon? 4. 4 है ना. Double the number of carbon atoms, 4 plus NaI, sodium iodide, ठीक है. Let us suppose you have something like this. 1 2 3 है. You have 3 carbon atoms, chlorine in the presence of Na dry ether. Now the alkane will be of how many carbon atoms? बोलो भाई. सर अरे 6. 6 carbon Six. atoms. 1 2 3 4. What, Krishna Priya? 6 carbons. 6 carbon, ठीक है. वेरी गुड. दिस इज ऑल फाइन, गुड, वेरी, बहुत बढ़िया. अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए ना. Now how many carbon atoms, tell me Safia? In this how many carbon atoms? 3. 3, ठीक है. अब now the product will be of how many carbon atoms, tell me? प्रोडक्ट कितने कार्बन एटम का होगा? डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना. 3 का डबल Yes, sir. कितना हो जाएगा? 3 का डबल 6. बट द स्ट्रक्चर विल बी अ बिट डिफरेंट, ठीक है. स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा. स्ट्रक्चर कैसा होगा प्लीज सी. व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड ना, मतलब बाकी सब में भी आप कर सकते हैं. You have the alpha carbon. I hope you remember alpha carbon. This is alpha carbon. You make this compound once again. और अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड कर दीजिएगा, ठीक है. कंपाउंड बना दिया. अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड, ठीक है. रिमूव द Br. दोनों से आपने Br निकाल दिया. अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन को ज्वाइन कर दीजिए. बात समझ में आ रही है? ये सुनो प्लीज, चल गाइस. बोलो भाई. Yes, sir. पक्का ना. देखिए अब इसको देखिए, तो थोड़ा सा बदसूरत लग रहा आपको होगा. आपको ऐसा तो सर हम लोग कभी लिखते नहीं है. ये तो लग रहा बच्चों के खेलने का सीसो है, ठीक है. सो सी व्हाट यू कैन डू देन इज टू स्टार्ट विद द टर्मिनल कार्बन, या आखिरी कार्बन से स्टार्ट कीजिए, एंड देन चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो यू विल चूज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. 4 कार्बन का हो गया. सो और यू विल राइट, ये ऐसे बना दीजिए, या फिर 1 2 3 4, then you number it 1 2 3 4. In the second carbon atom we have a methyl group, so 1 2, second carbon methyl group CH3, third carbon methyl group, so CH3, ठीक है. So you will make it like this. बात समझ में आ रही है सबको? ये सुनो प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. और देखिए बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बट लेकिन हाँ आपको थोड़ा हिम्मत करके ना, आपको हिम्मत करके कंपाउंड को बनाना पड़ेगा. Cl, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर. यू रिमूव द क्लोरीन और इसी कंपाउंड को 2 बार बना लीजिए. क्लोरीन रिमूव कर दिया, 2 बार कंपाउंड को बना दीजिए, एंड देन यू विल आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन. तो ऑब्वियसली दिस इज द अल्फा कार्बन यहाँ पे, और इस कार्बन यहाँ पे दिस इज द अल्फा कार्बन. यू विल ज्वाइन दीज टू. आपने ज्वाइन कर दिया. देन यू विल चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑब्वियसली यू सी दैट यहाँ पे 3 कार्बन है, फिर उसके बाद ये एक बॉन्ड आया, एंड देन यू हैव दीज कार्बन एटम्स. So if I count the number of carbon atoms, then it is going to be 1 2 3 4 5 6, or you can write it like this 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 में एक methyl group है CH3. Then in the fourth carbon atom there is a methyl group CH3. बात समझ में आ रही है? yes or no, please tell me guys. Yes, sir. यस सर. आप ये इसको जरा.
Yusuf, waiting for you. Others, raise your hand once you're done. ठीक। अब देखिए बाकी सारे रिएक्शन आसान है। बी लिखिएगा। Fitic reaction, ठीक है? So fitic reaction, what will happen? You have a haloarene. You will react this with sodium in the presence of dry ether, and you will get diphenyl or biphenyl. दोनों में से कोई भी नाम आप बोल सकते हैं. Benzene ring attached with another benzene ring. Simple. ठीक है, इसमें कुछ नहीं. This is diphenyl or it is biphenyl. C part is Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction में you will have a haloalkane and you will have a haloarene. You will react both of these in the presence of sodium and dry ether, and you will get alkyl benzene. Sir, for the Wurtz-Fittig reaction, the final product you drew haloarene. My bad. यार यहाँ पे R होगा. Thank you कृष्ण प्रिया. So will be alkyl benzene. ठीक है. So देखिए यहाँ पे तो आपके पास प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा. But in Wurtz-Fittig reaction, let us suppose if you have CH3 Br plus something like this in the presence of sodium and dry ether, then you will get toluene. Benzene ring with CH3, it is known as what? Toluene. Then guys, this one please tell me. Done, sir. Please write a few notes. First is Wurtz reaction. Cannot be done with two different haloalkane, as it would give a mixture of alkane difficult to separate. ठीक है, क्या मतलब इसका? देखिए, for an example, let us suppose we have methyl bromide and I react this with ethyl bromide, CH3 CH2Br, in the presence of sodium and dry ether. ठीक है. Now please see, there are
a few reaction that can occur. ध्यान दीजिएगा, when we have taken a solution of methyl and ethyl bromide and reacted with sodium तो देखिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि this molecule will react with this molecule. करेक्ट है गाइस? yes or no please tell me, है ना? एक्सपेक्टेशन तो यही है that CH3Br will react with CH3CH2Br और आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा. Yes, that is true. We will get one product which is what having 3 carbon atoms, propane. But also remember, there will be a few CH3Br, there will be a few methyl bromide, which will never even collide with the ethyl bromide. They will collide with another molecules of methyl bromide, and they will do a reaction which will give you CH3CH3. That is ethane. Similarly, there will be plenty of ethyl bromide which will never collide, which will not even see methyl bromide, and they will react with themselves because this reaction can occur with haloalkane itself. Though molecule of CH3CH2Br will react and they will form a butane. As you can see, we are getting 3 different products with very similar molecular masses, and this mixture will be difficult to separate. बात समझ में आई? yes or no please tell me guys. नहीं आया क्या समझ में? oh my god. Yes, समझ में tell आया. me, समझ में आया ना? समझ में आया. Yes, understood. Write this down.